बाय बाय सुनीता शुक्ला दीदी, बाय 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 बाय। आपण म्हणजे
अभी कोई अंदर से कहीं आवाज आ गया आ रही है ब्रेड ऐसे बना किस चीज का हाँ बीजेपी तो चाहिए
स्क्रीन पे 2 बार टाइप करते जाइए आप लोग, बहनी दीदी भैया लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए प्लीज़। किसका किसका पाचन तंत्र खराब रहता है ये बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक को लाइक करते जाइए आप लोग। स्क्रीन पे 2 बार टाइप करिए, लाइक कर दीजिए। और जिसका जिसका पाचन सब खराब रहे, उसके बाद किसका किसका हाथ पैर में क्या है, जोड़ों की दर्द है, वो भी बताइए। हम घरेलू नुस्खा बताएंगे, आप लोग एक बार उसको ज़रूर अपनाइएगा और तब बताइएगा कमेंट करके लाइव में कि आप लोग को राहत मिली कि नहीं। बहुत सरल, बहुत इजी, और वो हमें किचन में ही मिल जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, और उससे मतलब जितना टाइम हम खाए रहते हैं उतने टाइम में वो भी 100% मतलब रिलैक्स नहीं महसूस होता हमको। जहाँ लग 100% एकदम कंप्लीट, मतलब ऐसे कि हमारे एसिडिटी, पेट का मतलब पेट नहीं साफ होता है, और खा लेता है कुछ तो हजम ना होता है। तो हम एकदम इजी, एकदम सरल तरीका आप सब बताकर घर में ही मिले वाला, बहुत ज़्यादा खर्चा ना है। स्क्रीन पे 2 बार आप लोग टाइप करते जाइए, और जिसको जिसको ये चीज़ समस्या है वो बताइए, कमेंट जरूर करें। और कितने कितने मात्रे में आप लोग को लेके वो बनाना है, बस 10 मिनट का काम है, और ज़्यादा नहीं, खाली एकदम कम खर्चे में आपका ये जान लो कि ओके 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 ओके। चैनल पे टाइप करते जाइए आप लोग। लाइव को 2 बार ऐसे, स्क्रीन पे 2 बार ऐसे टाइप करिए, ऐसे टाइप करेंगे तो लाइव भी मिल जाएगी। और चैनल से नए हैं चैनल पे, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको जिसको पाचन तंत्र की समस्या है, मतलब हम कुछ तला भुना हम डर के मारे क्या करते हैं, खाते भी नहीं हैं कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, तेल मसाला नहीं खाएंगे। हम खा लेंगे तो कितना लोग को ऐसे नहीं, पेट नहीं साफ होते तो क्या होता कि बवासीर मतलब पाइल्स का भी रहता है कि हमारा पेट नहीं साफ हुआ तो पाइल्स का डर रहता है, डर के मारे लोग पेट भर के खाते हैं। तो हम आप लोग एकदम सरल, एकदम इजी तरीका बताते, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए, जिसको जिसको है ये समस्या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक को लाइक करते जाइए आप लोग।
स्क्रीन पे 2 बार टाइप करिए। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। लाइव को लाइक करते जाइए प्लीज़, आप सभी लोग लाइक करते जाइए। ठीक है राघव भैया, ठीक है।
प्लीज़ लाइव को लाइक करते जाइए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए आप लोग, चैनल से जुड़ते जाइए। देखिए कमेंट करत जा, जेका जेका पेट का समस्या हो, बहुत सरल बहुत ईजी दवाई लेके आई है। और
मिस कर दे जाओ तो फिर भैया बहनी दीदी दादी दादा लोग की फिर आप सबकी वैसे परेशानी बनी रहे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ जाए आप सबके। तो एक आता है घरेलू नुस्खा, एकदम इजी, एकदम सरल, एकदम सस्ती दवाई।
फटाफट चैनल से जुड़ते जाइए आप लोग।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चैनल पे जुड़ते जाइए आप लोग, लाइव को लाइक करते जाइए। धन्यवाद। कोई अपना समस्या नहीं बता दे रहा है तो बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है हमारे पास। एक बार आप लोग कर लोगे ना तो उसको समझ लो कि लाइव में आके जरूर बताओगे कि हाँ हम बहुत अच्छे नुस्खा बताए हैं। बहुत सरल एकदम ईजी नुस्खा, न समय ज़्यादा न पैसा ज़्यादा, काम बहुत फटाफट अच्छा। इसका जान लो कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।
ठीक है रीता भाभी, ऑन रहिए।
आप लोग प्लीज़ लाइव को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाइव में बैठे
भावेश भैया राधे राधे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब कमाओ, खूब बड़े आदमी बनो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो भावेश भैया? हम ठीक है, अपना बताओ, आप कैसे हो? ये बात भैया आप कैसे? हम तो ठीक है। इनका बोल के गए हैं वहाँ दिना। भावेश भैया ये मेहमान आए, भाई लोग भूल ही गए हैं। जब भैया भूल गए तो भाभी कैसे याद रहेगा? और सब व्यस्त व्यस्त हैं, कौन आने वाला है हमारे घर? बड़े लोग की चाह है, हम छोटे लोग की कहाँ इज्जत है कहीं? हाँ बताइए। आज मेरा व्रत है, आज सोमवार का लास्ट है, सावन का व्रत। आप लोग के यहाँ तो अमावस्या से चालू हुआ, अभी 15 दिन बीत ही गया। आगे का दर्शन दिन बाहर में बैठी हूँ, दोनों तरफ से खुला है, एकदम से वो नहीं, देखो फोकस की वजह से ना क्लीन नहीं आ रहा। इधर बैठे हूँ, क्लीन नहीं है। सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। अब इसलिए टीका बहनी राधे राधे, हमारी लाइन में आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। देख लो, मैं घर हूँ कि मुंबई हूँ, देख लीजिए। पता नहीं अब भाभी सुन रही हैं कि नहीं। रीता भाभी, भावेश भैया आवाज़ लगा रहे हैं आपको, आ जाइए, कहाँ पे हो? रीता भौजी का भोजन का समय हो गया हो, रोटी भी बना रही हैं गरम गरम।
नहीं है, उनकी बेटियां हैं लगाई हैं लाइन में। ऑन हो जा बेटा, ऑन कर दो मोबाइल। अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो परेशान मत हो, लाइक करके चली जाइए, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी आईडी सभी आईडी लाइक करके अपने मोबाइल निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनीता बहन को मैं बोल रही हूँ, बिटिया रानी लोग आप लोग हो, लाइक करके सभी आईडी चली जाइए। 3 आईडी है ना, तीनों से लाइक कर दीजिए बस। पढ़ाई वढ़ाई करना तो मोबाइल अपना निकाल लीजिए, पढ़ाई करिए। आ गई है भौजी, बताइए भावेश भैया। आ गई अब इन्हीं को बता, रीता भाभी देखिए क्या बोल रहे हैं आपको। तो मेरी आवाज़ सुन रही थी ना, म्यूट कर देती तो अपना भी लैपटॉप में लगा के काम करने लगती हैं। आज हम बोले बहुत दिन हो गया सबसे बात की, थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ मैं बता तो रही भावेश भैया को, रीता भौजी गर्मा गर्म इसमें रोटी बना रही हैं। आपको भी भोजन पाना है तो चले जाइए, खा लीजिए। बहुत ज़्यादा बन गई तुम्हारी बॉडी तो। मेरा व्रत है रीता भाभी, नहीं अपने देवर जी को बुलाइए और दे दीजिए। भावेश भैया का गर्मा गर्म रोटी पाओ, सब्जी। रीता भाभी बहुत बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनाती हैं। व्रत के दिन इनका आइटम मैं नहीं देखने जाती, मुँह में पानी आता है। वो भी वीडियो के सामने बैठ बैठ के आराम से लपेट लपेट कर खाती है। सच बोल रही हूँ भाभी, मैं आपके मुंह के सामने आपकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ।
भाभी? भाभी भैया आपको लेट करवा रहे हैं, अभी आपकी लाइव का समय हो जाएगा, 1:15 बज चुका है। आप ऑन होके अपना आराम से काम कर लीजिए। सदा सुहागा रहो हाथ, और सच में यह सही बात है। सदा सुहागा रहो, आपकी भाभी जोड़ी हमेशा बनी रहे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कमाते रहो, खाते रहो, बड़े आदमी बन जाओ। काहो भौजी काहे डिलीट करता हूँ? काहे डिलीट करत यहाँ? हाँ प्रताप गढ़िया बोली, काहे डिलीट करत यहाँ ऐसे? देखो आपके देवर जी भी बोल दिया, आप आराम से काम कर लीजिए भाभी, परेशान ना करिए, आराम से काम कर लीजिए, नहीं लेट हो जाएगा।
छोटा कमेंट करो भोजी, उसके बाद अपना काम कर लीजिए। हम जो कमेंट है हमारे चैनल पे हम आपको व्यू दे देंगे इसके। व्यू तो शायद आपके दोनों आईडी पे नहीं है। हाँ, दोनों आईडी। हाँ ठीक है, आ रही होगी, आ रही है। अपना काम कर लीजिए, आ रही है।
राघव भैया ऑन हो जाओ ना, समय किसी और को समय दे दो। कितना हुआ है आपका? 3-4 दिन से तो मैं रात में नहीं लगा रही हूँ, अपने अवधि संगीत को चला दे रही थी।
बाय गीता भाभी, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय।
राघो भैया और के समय देखो तो जा बाय बाय कह दो, बाय बाय कह दो कि लाइव में और समय देखो तो जाओ। थैंक यू लाइव करने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। राधा लगी रहने दो, प्रतिभा बन के लाइव में लगी रहने दो। काम धाम करती रहो, सामने बैठ के अपना काम करती रहो, लाइव चलाती रहो।
ब्लाउज व्लाउज कटिंग करती रहा करो लाइव के सामने, थोड़ा उन लोगों को भी सीखने का चांस मिल जाएगा आपको भी। जो पूछेगा थोड़ा बता देना कैसे कैसे करना रहता है। आप लोग तो बहुत अच्छा ब्लाउज बनाती हो। यूट्यूब फैमिली हमारा परिवार है, हम उनके सामने तो थोड़ा कटिंग वटिंग करी, ब्लाउज व्लाउज सिलाई करी, थोड़ा उनसे हंसते बोलते रहें तो फटाफट अपना काम भी करते रहें।
बार बार आपको भैया